प्रिय भक्तों नमस्कार। गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन मां काली की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा और उनकी 10 महाविद्याओं की विशेष पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि को विशेष रूप से गुप्त साधनाओं के लिए जाना जाता है। 10 महाविद्याओं में मां काली प्रथम रूप हैं। मां काली जी का स्वरूप अत्यंत विकराल, अभयंकारी और मंगलकारी है। मां काली का यह स्वरूप असुरों का नाश करने वाला है। यदि कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के दौरान मां काली की पूजा करता है तो उसके ऊपर आसुरी शक्तियों का कोई असर नहीं होता है। मां काली की पूजा करने वाले व्यक्ति को रूप, यश और जय की प्राप्ति होती है। समस्त सांसारिक बाधाएं खत्म हो जाती हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको मां काली का मंत्र, स्तोत्र और कवच बता रहे हैं। श्रद्धा भाव से श्रवण करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे अथ कालिका स्तोत्रम् दधन्नेरन्तर्यादपि मलिनचर्यां सपदीयत् सपर्यां पश्यन् संविशतो सुरपुर्यां नरपशुः अटान्वर्यान् वीर्या समहरद सूर्यान् समितिया जगद्धुर्या काली मम मनसि कुर्यान्निवसति लसान्ना सा मुक्ता निज चरण भक्तावन विधौ समुद्युक्ता रक्तांबुरुह दृगलक्ता धरपुटा अपि व्यक्ता व्यक्ता नियम नियम सक्ता शयशया जगद्धुर्या काली मम मनसि कुर्यान्निवसति रणत्सन्मञ्जीरा खलदमन धीरातिरुचिरा स्फुरद्विद्युच्चीरा सुजन झषनीरायिततनुः विराजत कोटीरा विमलतर हीरा रणभृता जगद्धुर्या काली मम मनसि कुर्यान्निवसति वसाना कौशेयं कमलनयना चन्द्रवदना दधाना कारुण्यं विपुलजघना कुन्दरदना पुनाना पापाद्या सपदि विबुधाना भवभयं जगद्धुर्या काली मम मनसि कुर्यान्निवसति रथोतं सप्रेक्ष्य रणरणिकया मेरुशिखरात् समागाद्या रागान् झटिति यमुनागाधिपमसौ नगाधीश प्रेष्टा नगपतिसुता निरजरनुता जगद्धुर्या काली मम मनसि कुर्यान्निवसति विलसन्नवरतनमालिका कुटिलश्यामलकुन्तलालिका नवकुमकुम भव्यभालिकावतु सा मां सुखकृद्दिकालिका यमुनाचलद्यमुना दुःखदवस्य देहिनाम् अमुना यदि वीक्षिता सुकृच्छमुना नाविधमातनोत्यहो अनुभूति सति प्राणपरित्राणपरायणा देवः कृतसपर्या सा काली कुर्याच्छुभानि य इदं कालिका स्तोत्रं पठेत्तु प्रयतः शुचिः देवी सायुज्य भुक्चेह सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। अथ श्री कालिका कवचम्। श्री सदाशिव उवाच कथितं परमं ब्रह्म प्रकृतिः स्तवनं महत् आद्यायः श्रीकालिकायाः कवचं शृणु साम्प्रतम् त्रैलोक्यविजयस्यास्य कवचस्य ऋषिः शिवः छन्दोनुष्टुप्देवता च आद्या काली प्रकीर्तिता माया बीजं बीजमिति रमा शक्तिरुदाहृता क्रीं कीलकं काम्यसिद्धौ विनियोगः प्रकीर्तितः ह्रीमाद्या मे शिरः पातु श्रीं काली वदनं मम हृदयं क्रीं पराशक्तिः पायात् कण्ठं परात्परा नेत्रे पातु जगद्धात्री कर्णौ रक्ष्यतु शङ्करी घ्राणं पातु महामाया रसनां सर्वमङ्गला दन्तान् रक्षतु कौमारी
कपोलौ कमलालया ओष्ठाधरौ क्षमारक्षे चिबुकं चारुहासिनी ग्रीवां पायात् कुलेशानि ककुतपातु कृपामयी द्वौ बाहु बाहुदा रक्षेत् करौ कैवल्यदायिनी स्कन्धौ कपर्दिनी पातु पृष्ठं त्रैलोक्यतारिणी पार्श्वे पायादपर्पणा मे कटिं मे कमठासना नाभौ पातु विशालाक्षी प्रजस्थानं प्रभावती ऊरो रक्षतु कल्याणी पादौ मे पातु पार्वती जय दुर्गावतु प्राणान् सर्वांगं सर्वसिद्धिदां रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन च तत्सर्वं मे सदा रक्षेदाद्या काली सनातनी इति ते कथितं दिव्यं त्रैलोक्य विजयाभिधं कवचं कालिका देव्या आद्यायाः परमाद्भुतं पूजा काले पठेत्यस्तु आद्याधिकृतमानसः। अथ श्री लक्ष्मी नारायण स्तोत्र सत्यव्रतक्षेत्र ललामभूतो बाहासरित्तीरविराजमानः मखी प्रकृष्टो यर्षाणि पालै नारायणो यत विभाति लक्ष्म्याम् आत्रेय गोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रेः आचारशीलैरवितो वरिष्ठः आशास्यमानः परभक्तियुक्तेः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्यां श्रीवैष्णवाग्रे सरमाननीयाः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धाः सतसम्प्रदाया वनबद्धदीक्षाः त्वया प्रदाता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति आस्ते कदिव्याद्वरयेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्ध्यै भवतोपदिष्टमिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायण नामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेय गोत्रे कजनि प्रकृष्टः द्विजत्वं प्रतिपद्यमानाः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायणत्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं यूपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतो ग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चोत्तराच्चोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल यायजूकैः अत्यन्वयान्वयद्विद्वदग्र्यैः सुस्वद्वरेरद्वरवेदिदीप्रेः श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्य वंशावतंसः किल विप्रवर्यः श्री श्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो यर्षाणि पालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्वं यमपयं प्राह्वयति स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजोपयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवा भवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्रापन वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वानपराधवर्गान् हृद्यै समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात्
कल्याणकुल्या मृतवाहिनीशात् यूपः समुच्छायमुपेतो भूयः त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखाः कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरे धामनिवर्धमानो दभ्रं परमधाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समोद्भवन् श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्या ध्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्मदेवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीनां जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णां पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षः श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामसमृद्धिं सकलामुपैतो देवसमाराधनसम्प्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातो अत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावासरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि दधन्नेरन्तर्यादपि मलिनचर्यां सपदीयत् सपर्यां पश्यन् संविशतु सुरपुर्यां नरपशुः हठान्वर्यान् वीर्या समहरद सूर्यान् समितिया जगद्धुर्या काली मम मनसि कुर्यान्निवसति लसान्ना सा मुक्ता निज चरण भक्तावनविधौ समुद्युक्ता रक्ताम्बुरुह दृगलक्ताधरपुटा अपि व्यक्ता व्यक्ता नियम नियम सक्ता शयशया जगद्धुर्या काली मम मनसि कुर्यान्निवसति रणत्सन्मञ्जीरा खलदमनधीरातिरुचिरा स्फुरद्विद्युच्चीरा सुजनझषनीरायिततनुः विराजत कोटीरा विमलतरहीरा रणभृत जगद्धुर्या काली मम मनसि कुर्यान्निवसति वसाना कौशेयं कमलनयना चन्द्रवदना दधाना कारुण्यं विपुलजघना कुन्दरदना पुनाना पापाद्या सपदि विबुधाना भवभयम् जगद्धुर्या काली मम मनसि कुर्यान्निवसति रथोतं सप्रेक्ष्य रणरणिकया मेरुशिखरात् समागाद्या रागान् झटिति यमुनागाधिपमसौ नगाधीश प्रेष्टा नगपतिसुता निरजरनुता जगद्धुर्या काली मम मनसि कुर्यान्निवसति विलसन्नवरतनमालिका कुटिलश्यामलकुन्तलालिका नवकुमकुम भव्यभालिका वतु सा मां सुखकृद्दिकालिका
यमुनाचलद्यमुना दुःखदवस्य देहिनाम् अमुना यदि वीक्षिता सुकृच्छमुना नाविधमातनोत्यहो अनुभूति सति प्राण परित्राण परायणा देवः कृत सपर्या सा काली कुर्याच्छुभानि य इदं कालिका स्तोत्रं पठेत्तु प्रयतः शुचिः देवी सायुज्य भुक्चेह सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। अथ श्री कालिका कवचम्। श्री सदाशिव उवाच कथितं परमं ब्रह्म प्रकृतिः स्तवनं महत् आद्यायः श्रीकालिकायाः कवचं शृणु साम्प्रतम्। त्रैलोक्यविजयस्यास्य कवचस्य ऋषिः शिवः छन्दोनुष्टुप्देवता च आद्या काली प्रकीर्तिता माया बीजं बीजमिति रमा शक्तिरुदाहृता क्रीं कीलकं काम्यसिद्धौ विनियोगः प्रकीर्तितः ह्रीमाद्या मे शिरः पातु श्रीं काली वदनं मम हृदयं क्रीं पराशक्तिः पायात् कण्ठं परात्परा नेत्रे पातु जगद्धात्री कर्णौ रक्ष्यतु शङ्करी घ्राणं पातु महामाया रसनां सर्वमङ्गला दन्तान् रक्षतु कौमारी कपोलौ कमलालया ओष्ठाधरौ क्षमा रक्षे चिबुकं चारुहासिनी ग्रीवां पायात् कुलेशानि ककुत पातु कृपामयी द्वौ बाहु बाहुदा रक्षेत् करौ कैवल्यदायिनी स्कन्धौ कपर्दिनी पातु पृष्ठं त्रैलोक्यतारिणी पार्श्वे पायादपर्पणा मे कटिं मे कमठासना नाभौ पातु विशालाक्षी प्रजस्थानं प्रभावती ऊरो रक्षतु कल्याणी पादौ मे पातु पार्वती जय दुर्गावतु प्राणान् सर्वांगं सर्वसिद्धिदां रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन च तत्सर्वं मे सदा रक्षेदाद्या काली सनातनी इति ते कथितं दिव्यं त्रैलोक्य विजयाभिधं कवचं कालिका देव्या आद्यायाः परमाद्भुतं पूजा काले पठेत्यस्तु आद्याधिकृतमानसः। अथ श्री लक्ष्मी नारायण स्तोत्र सत्यव्रतक्षेत्रललाम भूतो बाहासरित्तीरविराजमानः मखी प्रकृष्टो यर्षाणि पालै नारायणो यत विभाति लक्ष्म्याम् आत्रेय गोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रेः आचारशीलैरवितो वरिष्ठः आशास्यमानः परभक्तियुक्तेः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्यां श्रीवैष्णवाग्रे सरमाननीयाः आचार्यवर्या जगते प्रसिद्धाः सतसम्प्रदाया वनबद्धदीक्षाः त्वया प्रदाता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति आस्ते कदिव्याद्वरयेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्ध्यै भवतोपदिष्टमिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायण नामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेय गोत्रे कजनि प्रकृष्टः द्विजत्वं प्रतिपद्यमानाः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायणत्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं
यूपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतो ग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चोत्तराच्चोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल यायजूके अत्यन्वयान्वयद्विद्वदग्रे सुस्वद्वरेरद्वरवेदिदीप्रेः श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्य वंशावतंसः किल विप्रवर्यः श्री श्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो यरषाणिपालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्वं यमपयं प्राह्वयति स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजोपय दीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवा भवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्राप न वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वान् अपराधवर्गान् हृद्यै समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्या मृतवाहिनीशात् यूपः समुच्छायमुपेतो भूयः त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरे धामनिवर्धमानो दभ्रं परमधाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन् श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्या ध्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीनां जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोऽग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णां पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षः श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामसमृद्धिं सकलामुपैतो देवसमाराधनसम्प्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातो अत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावासरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि दधन्नेरन्तर्यादपि मलिनचर्यां सपदीयत् सपर्यां पश्यन् संविशतो सुरपुर्यां नरपशुः पटान्वर्यान् वीर्या समहरद सूर्यान् समितिया जगद्धुर्या काली मम मनसि कुर्यान् निवसति
लसान्ना सामुक्ता निज चरण भक्तावन विधौ समुद्युक्ता रक्तांबुरुह दृगलक्ता धरपुटा अपि व्यक्ता व्यक्ता नियम नियम सक्ता शयशया जगद्धुर्या काली मम मनसि कुर्या निवसति रणत्सन्मञ्जीरा खलदमन धीरातिरुचिरा स्फुरद्विद्युच्चीरा सुजन झषनीरायिततनुः विराजत कोटीरा विमलतर हीरा रणभृत जगद्धुर्या काली मम मनसि कुर्या निवसति वसाना कौशेयं कमलनयना चन्द्रवदना दधाना कारुण्यं विपुलजघना कुन्दरदना पुनाना पापाद्या सपदि विबुधाना भवभयम् जगद्धुर्या काली मम मनसि कुर्या निवसति रथोतं सप्रेक्ष्य रणरणिकया मेरुशिखरात् समागाद्या रागान् झटिति यमुनागाधिपमसौ नगाधीश प्रेष्टा नगपतिसुता निरजरनुता जगद्धुर्या काली मम मनसि कुर्या निवसति विलसन्नवरतनमालिका कुटिलश्यामलकुन्तलालिका नवकुमकुम भव्यभालिकावतु सा मां सुखकृद्दिकालिका यमुनाचलद्यमुना दुःखदवस्य देहिनाम् अमुना यदि वीक्षिता सुकृच्छमुना नाविधमातनोत्यहो अनुभूति सति प्राण परित्राण परायणा देवः कृत सपर्या सा काली कुर्याच्छुभानि य इदं कालिका स्तोत्रं पठेत्तु प्रयतः शुचिः देवी सायुज्य भुकचेह सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। अथ श्री कालिका कवचम्। श्री सदाशिव उवाच कथितं परमं ब्रह्म प्रकृतिः स्तवनं महत् आद्यायः श्रीकालिकायाः कवचं शृणु साम्प्रतं त्रैलोक्यविजयस्यास्य कवचस्य ऋषिः शिवः छन्दोनुष्टुप्देवता च आद्या काली प्रकीर्तिता माया बीजं बीजमिति रमा शक्तिरुदाहृता क्रीं कीलकं काम्यसिद्धौ विनियोगः प्रकीर्तितः ह्रीमाद्या मे शिरः पातु श्रीं काली वदनं मम हृदयं क्रीं पराशक्तिः पायात् कण्ठं परात्परा नेत्रे पातु जगद्धात्री कर्णौ रक्ष्यतु शङ्करी घ्राणं पातु महामाया रसनां सर्वमङ्गला दन्तान् रक्षतु कौमारी कपोलौ कमलालया ओष्ठाधरौ क्षमा रक्षे चिबुकं चारुहासिनी ग्रीवां पायात् कुलेशानि ककुत पातु कृपामयी द्वौ बाहु बाहुदा रक्षेत् करौ कैवल्यदायिनी स्कन्धौ कपर्दिनी पातु पृष्ठं त्रैलोक्यतारिणी पार्श्वे पायादपर्पणा मे कटिं मे कमठासना नाभौ पातु विशालाक्षी प्रजस्थानं प्रभावती ऊरो रक्षतु कल्याणी पादौ मे पातु पार्वती जय दुर्गावतु प्राणान् सर्वांगं सर्वसिद्धिदां रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन च तत्सर्वं मे सदा रक्षेदाद्या काली सनातनी इति ते कथितं दिव्यं त्रैलोक्य विजयाभिधं कवचं कालिका देव्या आद्यायाः परमाद्भुतं पूजा काले पठेत्यस्तु आद्याधिकृतमानसः। अथ श्री लक्ष्मी नारायण स्तोत्र सत्यव्रतक्षेत्रललाम भूतो बाहासरित्तीरविराजमानः मखी प्रकृष्टो यर्षाणि पालै
नारायणो यत विभाति लक्ष्म्याम् आत्रेय गोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रेः आचारशीलैरभितो वरिष्ठः आशास्यमानः परभक्तियुक्तेः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्यां श्रीवैष्णवाग्रे सरमाननीयाः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धाः सतसम्प्रदाया वनबद्धदीक्षाः त्वया प्रदाता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति आस्ते कदिव्याद्वरयेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्ध्यै भवतोपदिष्टमिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायण नामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेय गोत्रे कजनि प्रकृष्टः द्विजत्वं प्रतिपद्यमानाः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायणत्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं यूपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतो ग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चोत्तराच्चोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल यायजूकैः अत्यन्वयान्वयद्विद्वदग्र्यैः सुस्वद्वरेरद्वरवेदिदीप्रेः श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्य वंशावतंसः किल विप्रवर्यः श्रीश्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो यरषाणिपालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्वं यमपयं प्राह्वयति स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजोपयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवा भवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्राप न वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वानपराधवर्गान् हृद्यै समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्या मृतवाहिनीशात् यूपः समुच्छायमुपेतो भूयः त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरे धामनिवर्धमानो दभ्रं परमधाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समोद्भवन् श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्या ध्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीनां जाताश्च दूरे सुखजीविकायै
परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णां पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षः श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामसमृद्धिं सकलामुपैतो देवसमाराधनसम्प्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातो अत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावासरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके। लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि। दधन्नैरन्तर्यादपि मलिनचर्यां सपदीयत् सपर्यां पश्यन् सन्विशतु सुरपुर्यां नरपशुः पटान्वर्यान् वीर्या समहरद सूर्यान् समितिया जगद्धुर्या काली मम मनसि कुर्यान्निवसति लसान्ना सा मुक्ता निजचरण भक्तावनविधौ समुद्युक्ता रक्ताम्बुरुहदृगलक्ताधरपुटा अपि व्यक्ता व्यक्ता नियम नियम सक्ता शयशया जगद्धुर्या काली मम मनसि कुर्यान्निवसति रणत्सन्मञ्जीरा खलदमनधीरातिरुचिरा स्फुरद्विद्युच्चीरा सुजनझषनीरायिततनुः विराजत कोटीरा विमलतरहीरा रणभृता जगद्धुर्या काली मम मनसि कुर्यान्निवसति वसाना कौशेयं कमलनयना चन्द्रवदना दधाना कारुण्यं विपुलजघना कुन्दरदना पुनाना पापाद्या सपदि विबुधाना भवभयम् जगद्धुर्या काली मम मनसि कुर्यान्निवसति रथोतं सप्रेक्ष्य रणरणिकया मेरुशिखरात् समागाद्या रागान् झटिति यमुनागाधिपमसौ नगाधीश प्रेष्टा नगपतिसुता निरजरनुता जगद्धुर्या काली मम मनसि कुर्यान्निवसति विलसन्नवरतनमालिका कुटिलश्यामलकुन्तलालिका नवकुमकुम भव्यभालिकावतु सा मां सुखकृद्दिकालिका यमुनाचलद्यमुना दुःखदवस्य देहिनाम् अमुना यदि वीक्षिता सुकृच्छमुना नाविधमातनोत्यहो अनुभूति सति प्राण परित्राण परायणा देवः कृत सपर्या सा काली कुर्याच्छुभानि य इदं कालिका स्तोत्रं पठेत्तु प्रयतः शुचिः देवी सायुज्य भुकचेह सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। अथ श्री कालिका कवचम्। श्री सदाशिव उवाच कथितं परमं ब्रह्म प्रकृतिः स्तवनं महत् आद्यायः श्रीकालिकायाः कवचं शृणु साम्प्रतं त्रैलोक्यविजयस्यास्य कवचस्य ऋषिः शिवः छन्दोनुष्टुप्देवता च आद्या काली प्रकीर्तिता माया बीजं बीजमिति रमा शक्तिरुदाहृता क्रीं कीलकं काम्यसिद्धौ विनियोगः प्रकीर्तितः ह्रीमाद्या मे शिरः पातु श्रीं काली वदनं मम हृदयं क्रीं पराशक्तिः पायात् कण्ठं परात्परा नेत्रे पातु जगद्धात्री
कर्णौ रक्ष्यतु शङ्करीं घ्राणं पातु महामाया रसनां सर्वमङ्गला दन्तान् रक्षतु कौमारीं कपोलौ कमलालया ओष्ठाधरौ क्षमा रक्षे चिबुकं चारुहासिनी ग्रीवां पायात् कुलेशानि ककुत पातु कृपामयी द्वौ बाहु बाहुदा रक्षेत् करौ कैवल्यदायिनी स्कन्धौ कपर्दिनी पातु पृष्ठं त्रैलोक्यतारिणी पार्श्वे पायादपर्पणा मे कटिं मे कमठासना नाभौ पातु विशालाक्षी प्रजस्थानं प्रभावती ऊरो रक्षतु कल्याणी पादौ मे पातु पार्वती जय दुर्गावतु प्राणान् सर्वांगं सर्वसिद्धिदां रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन च तत्सर्वं मे सदा रक्षेदाद्या काली सनातनी इति ते कथितं दिव्यं त्रैलोक्य विजयाभिधं कवचं कालिका देव्या आद्यायाः परमाद्भुतं पूजा काले पठेत्यस्तु आद्याधिकृतमानसः। अथ श्री लक्ष्मी नारायण स्तोत्र सत्यव्रतक्षेत्रललाम भूतो बाहासरित्तीरविराजमानः मखी प्रकृष्टो यर्षाणि पालै नारायणो यत विभाति लक्ष्म्याम् आत्रेय गोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रेः आचारशीलैरवितो वरिष्ठः आशास्यमानः परभक्तियुक्तेः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्यां श्रीवैष्णवाग्रे सरमाननीयाः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धाः सतसम्प्रदाया वनबद्धदीक्षाः त्वया प्रदाता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति आस्ते कदिव्याद्वरयेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्ध्यै भवतोपदिष्टमिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायण नामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेय गोत्रे कजनि प्रकृष्टः द्विजत्वं प्रतिपद्यमानाः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायणत्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं यूपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतो ग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चोत्तराच्चोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल यायजूकैः अत्यन्वयान्वयद्विद्वदग्र्यैः सुस्वद्वरेरद्वरवेदिदीप्रेः श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्य वंशावतंसः किल विप्रवर्यः श्री श्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो यर्षाणि पालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्वं यमपयं प्राह्वयति स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजोपय दीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवा भवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्राप न वेद्मि तत्त्वं
क्षमस्व सर्वान् अपराधवर्गान् हृद्यै समीक्ष्य सुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्या मृतवाहिनीशात् यूपः समुच्छायमुपेतो भूयः त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखाः कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरे धामनिवर्धमानो दभ्रं परमधाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समोद्भवन् श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्या ध्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्मदेवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीनां जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णां पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षः श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामसमृद्धिं सकलामुपैतो देवसमाराधनसम्प्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातो अत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावासरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि दधन्नेरन्तर्यादपि मलिनचर्यां सपदीयत् सपर्यां पश्यन् संविशतु सुरपुर्यां नरपशुः हठान्वर्यान् वीर्या समहरद सूर्यान् समितिया जगद्धुर्या काली मम मनसि कुर्यान् निवसति लसान्ना सा मुक्ता निज चरण भक्तावन विधौ समुद्युक्ता रक्ताम्बुरुह दृगलक्ताधर पुटा अपि व्यक्ता व्यक्ता नियम नियम सक्ता शयशया जगद्धुर्या काली मम मनसि कुर्यान् निवसति रणत्सन्मञ्जीरा खलदमन धीरातिरुचिरा स्फुरद्विद्युच्चीरा सुजन झषनीरायिततनुः विराजत कोटीरा विमलतर हीरा रणभृत जगद्धुर्या काली मम मनसि कुर्यान् निवसति वसाना कौशेयं कमलनयना चन्द्रवदना दधाना कारुण्यं विपुलजघना कुन्दरदना पुनाना पापाद्या सपदि विबुधाना भवभयम् जगद्धुर्या काली मम मनसि कुर्यान् निवसति रथोतं सप्रेक्ष्य रणरणिकया मेरुशिखरात् समागाद्या रागान् झटिति यमुनागाधिपमसौ नगाधीश प्रेष्टा नगपतिसुता निरजरनुता
जगद्धुर्या काली मम मनसि कुर्यान्निवसति। विलसन्नवरतनमालिका कुटिलश्यामलकुन्तलालिका नवकुमकुम भव्यभालिकावतु सा मां सुखकृद्दिकालिका। यमुनाचलद्यमुना दुःखदवस्य देहिनाम् अमुना यदि वीक्षिता सुकृच्छमुना नाविधमातनोत्यहो। अनुभूति सति प्राणपरित्राणपरायणा देवः कृतसपर्या सा काली कुर्याच्छुभानि। य इदं कालिका स्तोत्रं पठेत्तु प्रयतः शुचिः देवी सायुज्य भुक्चेह सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। अथ श्री कालिका कवचम्। श्री सदाशिव उवाच कथितं परमं ब्रह्म प्रकृतिः स्तवनं महत्। आद्यायः श्रीकालिकायाः कवचं शृणु साम्प्रतम्। त्रैलोक्यविजयस्यास्य कवचस्य ऋषिः शिवः छन्दोनुष्टुप्देवता च आद्या काली प्रकीर्तिता। माया बीजं बीजमिति रमा शक्तिरुदाहृता। क्रीं कीलकं काम्यसिद्धौ विनियोगः प्रकीर्तितः। ह्रीमाद्या मे शिरः पातु श्रीं काली वदनं मम। हृदयं क्रीं पराशक्तिः पायात् कण्ठं परात्परा। नेत्रे पातु जगद्धात्री कर्णौ रक्ष्यतु शङ्करी। घ्राणं पातु महामाया रसनां सर्वमङ्गला। दन्तान् रक्षतु कौमारी कपोलौ कमलालया। ओष्ठाधरौ क्षमा रक्षे चिबुकं चारुहासिनी। ग्रीवां पायात् कुलेशानि ककुत पातु कृपामयी। द्वौ बाहु बाहुदा रक्षेत् करौ कैवल्यदायिनी। स्कन्धौ कपर्दिनी पातु पृष्ठं त्रैलोक्यतारिणी। पार्श्वे पायादपर्पणा मे कटिं मे कमठासना। नाभौ पातु विशालाक्षी प्रजस्थानं प्रभावती। ऊरो रक्षतु कल्याणी पादौ मे पातु पार्वती। जय दुर्गावतु प्राणान् सर्वांगं सर्वसिद्धिदां। रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन च तत्सर्वं मे सदा रक्षेदाद्या काली सनातनी। इति ते कथितं दिव्यं त्रैलोक्य विजयाभिधं कवचं कालिका देव्या आद्यायाः परमाद्भुतं। पूजा काले पठेत्यस्तु आद्याधिकृतमानसः। अथ श्री लक्ष्मी नारायण स्तोत्र। सत्यव्रतक्षेत्रललाम भूतो बाहासरित्तीरविराजमानः। मखी प्रकृष्टो यर्षाणि पालै नारायणो यत विभाति लक्ष्म्याम्। आत्रेय गोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रेः आचारशीलैरवितो वरिष्ठः। आशास्यमानः परभक्तियुक्तेः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्यां। श्रीवैष्णवाग्रे सरमाननीयाः आचार्यवर्या जगते प्रसिद्धाः। सतसम्प्रदाया वनबद्धदीक्षाः त्वया प्रदाता जगतां विभान्ति। भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति। आस्ते कदिव्याद्वरयेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत्। इष्टार्थसिद्ध्यै भवतोपदिष्टमिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र। यज्ञो हि नारायण नामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम्। आत्रेय गोत्रे कजनि प्रकृष्टः द्विजाद्विजत्वं प्रतिपद्यमानाः। भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभां क्लितुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै। नारायणत्वं रमया समेतः
प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं यूपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतो ग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चोत्तराच्चोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल यायजूकैः अत्यन्वयान्वयद्विद्वदग्रे सुस्वद्वरेरद्वरवेदिदीप्रेः श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्य वंशावतंसः किल विप्रवर्यः श्री श्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो यरशाणिपालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्वं यमपयं प्राह्वयति स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजोपय दीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवा भवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्रापन वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वान् अपराधवर्गान् हृद्यै समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्या मृतवाहिनीशात् यूपः समुच्छायमुपेतो भूयः त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरे धामनिवर्धमानो दभ्रं परमधाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समोद्भवन् श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्या ध्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीनां जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोऽग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णां पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षः श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामसमृद्धिं सकलामुपैतो देवसमाराधनसम्प्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातो अत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावासरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि दधन्नेरन्तर्यादपि मलिनचर्यां सपदीयत् सपर्यां पश्यन् संविशतु सुरपुर्यां नरपशुः हठान्वर्यान् वीर्या समहरद सूर्यान् समितिया
जगद्धुर्या काली मम मनसि कुर्यान्निवसति लसान्ना सा मुक्ता निज चरण भक्तावन विधौ समुद्युक्ता रक्तांबुरुह दृगलक्ताधर पुटा अपि व्यक्ता व्यक्ता नियम नियम सक्ता शयशया जगद्धुर्या काली मम मनसि कुर्यान्निवसति रणत्सन्मञ्जीरा खलदमन धीरातिरुचिरा स्फुरद्विद्युच्चीरा सुजन झषनीरायिततनुः विराजत कोटीरा विमलतर हीरा रणभृत जगद्धुर्या काली मम मनसि कुर्यान्निवसति वसाना कौशेयं कमलनयना चन्द्रवदना दधाना कारुण्यं विपुलजघना कुन्दरदना पुनाना पापाद्या सपदि विबुधाना भवभयम् जगद्धुर्या काली मम मनसि कुर्यान्निवसति रथोतं सप्रेक्ष्य रणरणिकया मेरुशिखरात् समागाद्या रागान् झटिति यमुनागाधिपमसौ नगाधीश प्रेष्टा नगपतिसुता निरजरनुता जगद्धुर्या काली मम मनसि कुर्यान्निवसति विलसन्नवरतनमालिका कुटिलश्यामलकुन्तलालिका नवकुमकुम भव्यभालिकावतु सा मां सुखकृद्दिकालिका यमुनाचलद्यमुना दुःखदवस्य देहिनाम् अमुना यदि वीक्षिता सुकृच्छमुना नाविधमातनोत्यहो अनुभूति सति प्राण परित्राण परायणा देवः कृत सपर्या सा काली कुर्याच्छुभानि य इदं कालिका स्तोत्रं पठेत्तु प्रयतः शुचिः देवी सायुज्य भुकचेह सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। अथ श्री कालिका कवचम्। श्री सदाशिव उवाच कथितं परमं ब्रह्म प्रकृतिः स्तवनं महत् आद्यायः श्रीकालिकायाः कवचं शृणु साम्प्रतं त्रैलोक्य विजयस्यास्य कवचस्य ऋषिः शिवः छन्दोनुष्टुप्देवता च आद्या काली प्रकीर्तिता माया बीजं बीजमिति रमा शक्तिरुदाहृता क्रीं कीलकं काम्य सिद्धौ विनियोगः प्रकीर्तितः ह्रीमाद्या मे शिरः पातु श्रीं काली वदनं मम हृदयं क्रीं पराशक्तिः पायात् कण्ठं परात्परा नेत्रे पातु जगद्धात्री कर्णौ रक्ष्यतु शङ्करी घ्राणं पातु महामाया रसनां सर्वमङ्गला दन्तान् रक्षतु कौमारी कपोलौ कमलालया ओष्ठाधरौ क्षमा रक्षे चिबुकं चारुहासिनी ग्रीवां पायात् कुलेशानि ककुत पातु कृपामयी द्वौ बाहु बाहुदा रक्षेत् करौ कैवल्यदायिनी स्कन्धौ कपर्दिनी पातु पृष्ठं त्रैलोक्यतारिणी पार्श्वे पायादपर्पणा मे कटिं मे कमठासना नाभौ पातु विशालाक्षी प्रजस्थानं प्रभावती ऊरो रक्षतु कल्याणी पादौ मे पातु पार्वती जय दुर्गावतु प्राणान् सर्वांगं सर्वसिद्धिदां रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन च तत्सर्वं मे सदा रक्षेदाद्या काली सनातनी इति ते कथितं दिव्यं त्रैलोक्य विजयाभिधं कवचं कालिका देव्या आद्यायाः परमाद्भुतं पूजा काले पठेत्यस्तु आद्याधिकृतमानसः। अथ श्री लक्ष्मी नारायण स्तोत्रम्। सत्यव्रतक्षेत्रललाम भूतो बाहासरित्तीरविराजमानः
मखी प्रकृष्टो यर्षाणि पालै नारायणो यत विभाति लक्ष्म्याम् आत्रेय गोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रेः आचारशीलैरभितो वरिष्ठः आशास्यमानः परभक्तियुक्तेः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्यां श्रीवैष्णवाग्रे सरमाननीयाः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धाः सतसम्प्रदाया वनबद्धदीक्षाः त्वया प्रदाता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति आस्ते कदिव्याद्वरयेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्ध्यै भवतोपदिष्टमिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायण नामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेय गोत्रे कजनि प्रकृष्टः द्विजत्वं प्रतिपद्यमानाः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायणत्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं यूपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतो ग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चोत्तराच्चोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल यायजूकैः अत्यन्वयान्वयद्विद्वदग्र्यैः सुस्वद्वरेरद्वरवेदिदीप्रेः श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्य वंशावतंसः किल विप्रवर्यः श्रीश्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो यर्षाणि पालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्वं यमपयं प्राह्वयति स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजोपयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवा भवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्राप न वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वानपराधवर्गान् हृद्यै समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्या मृतवाहिनीशात् यूपः समुच्छायमुपेतो भूयः त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरे धामनिवर्धमानो दभ्रं परमधाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समोद्भवन् श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्या ध्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जाताश्च दूरे
सुख जीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णां पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षः श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्राम समृद्धिं सकलामुपैतो देव समाराधन संप्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातो अत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावासरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके। लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतन निर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि।